Lok Sabha at its sitting held on 4th December 2023 has agreed without any amendment to the Advocates Amendment Bill 2023, which was passed by the Rajya Sabha at its sitting held on 3rd August 2023. Report of the Committee on Government Assurances, Dr. M. Thambidurai, Shri M. Mohammad Abdullah. I rise to present the 77th report in English and Hindi of the Committee on Government Assurance. Thank you, sir. Honorable members, notice under Rule 267 received from Shri Binoy Vishwam does not merit any admittance. Honorable members, it is not appropriate when a notice has been declined, the same notice is repeated the next day. Matters raised with permission, please. Professor Ram Gopal Yadav request to include a area community in the scheduled caste list of Uttar Pradesh. धन्यवाद श्रीमन उत्तर प्रदेश में अहेरिया जाति ये दलितों में भी या दलित के समान 1949 से पहले तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस वक्त के जॉइंट सेक्रेटरी भंडारकर साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी राज्य सरकारों को कि 1931 और 1941 के सेंसस में जो जातियां अनुसूचित जाति में हैं उनकी सूची भेजी जाए, उन्हीं को अनुसूचित जाति में रखा जाएगा। श्रीमन 31 के सेंसस में क्रमांक 26 पर अहेरिया, 27 पर बहेलिया और 28 पर पासी अंकित थे, एक ब्लॉक में रखा गया। 41 में भी क्रमांक 59 पर अहेरिया, 60 पर बहेलिया व 5 अन्य जातियां एक ही ग्रुप में रखी गईं। अज्ञात कारणों से बाद में इसमें से अहेरिया को अलग कर दिया गया, शेष जातियां शेड्यूल कास्ट में अब भी हैं। इस जाति के लोगों ने निरंतर प्रयास किए, लेकिन न संसाधन है न बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए इनका किसी ने सुना नहीं। अंत में 16 में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण के विभाग के प्रमुख सचिव ने एक पत्र लिखा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए, यहाँ दिल्ली के लिए, और उन्होंने लिखा कि अहेरिया जाति को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश से अहेरिया जाति का सर्वेक्षण एवं निर्जातीय अध्ययन कराया गया है। संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई अध्ययन आख्या में ये उल्लेख किया गया है कि अहेरिया जाति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं धार्मिक स्थिति को देखते हुए इस जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया जाना उचित है। अहेरिया जाति अनुसूचित जाति की सूची में किए जाने के सभी पात्रताएं एवं अर्हताएं और योग्यताएं रखती है और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति घोषित किए जाने के लिए प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की संस्तुति की जा रही है। इस अतः अनुरोध है कि कृपया उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली अहेरिया जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु कृपया आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। श्रीमन, सारे शोध के बाद, सारे पैरामीटर्स को ठीक पूरा करने के बाद भी इस उत्तर पत्र के जवाब में ये कहा गया कि वो ये हैं फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती। बिना रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने बिना किसी तरह का शोध कराए हुए यहाँ से एक चिट्ठी लिख दी। सर, स्थिति ये है Shri Samirul Islam, concern over delay in disbursement of funds dues to Manrega scheme in West Bengal. Respected Chairman Sir, the issue of Manrega is not only a union government scheme. It is an act established in 2005
The primary focus of this act is on the improvement of rural livelihoods. For around the last 20 years, the scheme has become the lifeline for marginal people in India, with crores of citizens depending on it as this act in their right. The program contributes to rural infrastructure and assets, indirectly addressing the basic demands and employment needs of a large section of people in rural India. Sir, however, my concern today is Mangreka and the neglected faced by the poor people of West Bengal. The budget allocation for Mangreka has been reduced to rupees 60,000 crore for the current fiscal year 2023 and 24. Bengal stands out as the only instance where the Union Ministry for Rural Development has completely withheld its allocation since 2021. Sir, the total due towards wages for lakhs of job card holders alone is around rupees 3,500 crore, with a total pending due worth rupees 7,000 crore. These figures highlight the situation where the Union government has not sanctioned even a penny for the poor people of Bengal under the scheme named after our father of the nation in the current fiscal year. Consequently, about 20 lakh people dependent on the rural scheme, also known as the 100-day work scheme, are struggling to access their right to income. Their plight sends an adverse message to society and is breaking the backbone of the rural economy in Bengal. Sir, this matter should be a subject of debate in this House, questioning who has the authority to deprive the poor people of the eastern state of Bengal. Sir, I want to remind you, sir, West Bengal is the state that stood first for multiple time in implication of Mangreka. Sir, another significant point is that under Mangreka, the government should pay wages to labor within 15 days after the completion of works. Ironically, laborers from Bengal have not received their due even after 2 years. This raises concern about the adherence to the rules and the impact on the life of those dependent on this vital scheme. Thank you, sir. Dr. John Britta's concern over rising concentration of wealth in the hands of few people in India. Sir, we are presiding over multiple level of paradox. On the one count, the Constitution talk about exhorting the governments to bring policies to reduce inequalities. On the other count, the policies of the government are instrumental in surging inequalities. So the Oxford report, the survival of the richest, talked about 1% of India owning more than 40% of the total wealth, while the bottom 50% share only 3%. We had a strange phenomena during the COVID season, sir. 84% of the people lost their income or reduced their income drastically, whereas the corporates increased their profits, sir. Sir, the government brought down the corporate tax and thereby enabled the corporates to benefit at least 2 lakh crore per year. Sir, the Oxford report adds that wealth of billionaires surged at an unprecedented rate of 2.5 crore rupees per minute, sir. Sir, yesterday only the finance minister replied to the Lok Sabha stated that more than 10 lakh crores have been written off of industries. 2,300 people have been castigated as willful defaulters, eating up more than 2 lakh crores, sir. Sir, we all harp on India being the 5th biggest economy, sir. So statistics and figures can be fake unless we analyze them, sir. So if you just look at the real picture, we are 127th on the ladder, and per capita GDP, we are behind Sri Lanka and even Bangladesh, sir. Okay, sir, on one count, we have increased the numbers. The number of billionaires in the country has gone up, and we are third. It's almost like 169 billionaires in India, sir. Sir, yesterday,
the stock exchange rallied. At the same time, there was a rally of Dalits and agriculture workers a stone throw away from Parliament. They were breathing for sustenance. They were demanding for land reforms. They were demanding for a remunerative wage. But our government was looking at the census rally because their friends benefited and their closest friend benefited, and the market cap went more than 12 lakh crores, sir. So this is the paradox on which our country is presiding, sir. So the other day, after the election victory, sir, you must have heard the Honorable Prime Minister saying that it's a victory of poor, the deprived, and the tribals. That was a statement of Honorable Prime Minister. Bhupendra Yadav, am I correct? Am I correct? Yes, that was a statement. Sir, do we want to make them the chair. What? Do we want to make all of us of course, for the opposition state when it comes to unity, it is beneficial. Sir, I leave the government. Honorable member is directed to put on the table of the House the assertion made by him that friends were benefited during course of the day. Sri A. Rahim, concern over increasing loan app crimes and other fraudulent activities in the country. Sir, I am in front of this guest house on behalf of the victims and people who lost their valuable lives due to loan apps crimes. Sir, recently there has been a significant surge in loan app crimes in the country. These crimes involve fraudulent activities committed using digital platforms, primarily through mobile applications offering quick and easy loans. This is a matter of grave concern and requires urgent action, sir. Sir, how could loan apps exploit a large number of people in our country, sir? Sir, the reasons are increasing unemployment and living expenditure. Sir, common people, especially the youth, are running from bank to bank for ordinary loans. But our nationalized banks are in a competition to provide loans to corporate without granting any loans to the needy masses, sir. Sir, our conventional banking system is denying loans to these poor and needy. This situation will naturally lead the common man to depend on other sources of money. Sir, the main reason for the increase in loan arms is the flawed financial policies of the government. Sir, the situation of people who borrow money through loan apps is very pathetic, sir. Once the payment is late or if they fail to pay the amount demanded by the app owners, the customer is blackmailed, and such mafias commit heinous crimes, including circulating deep fake videos and morphed images by using data extracted from the client during the registration process. Sir, this leads to client suicide and other problems, sir. Sir, what did the union government do the deal with this, sir? Their only response is silence. Sir, I urge the government, sir, expanding small credit schemes through nationalized banks, sir. Sir, strengthening the cooperative sector and promoting credit schemes through cooperative banks are the solutions, sir. Sir, active engagement is also required in the digital arena. Sir, for this awareness should be created among the public, which loans are legitimate and which are not. Sir, should be published at regular intervals. Service providers like Google, iOS shall be regulated in this regard. Apps that violate the law should be identified and punished. Sir, this is a problem that affects the lives of the youth and common people. I urge the government to take urgent action. Thank you, sir. Thank you, Mr. Honorable A. Rahim. Srimati J.B. Mathir Hisham, the subjected demand to take... Please. I'm deeply obliged by the opportunity
let me bring to the attention of this House one of the alarming issues that our country is facing today, that is farmer suicide. Sir, recently 2 farmers in my home state, Kerala, committed suicide. The suicide note of one of the farmers from Kuttanad says, "Ende maranathinu uttaravadi sarkar matram." The government is solely responsible. The government is solely responsible for my death. Sir, why did they commit suicide? Farmers log and sell their paddy to the government through Supplyco, Kerala State Supplies Corporation. Government do not disperse the paddy procurement price to the farmers, and there's an inordinate delay. Why this inordinate delay, sir? It is because instead of making direct payment to the farmers, the government, the Supplyco, have an impractical loan scheme by which the Supplyco will issue paddy receipt sheet, PRS, to the farmers at the time of procurement, and the farmers will have to give this PRS sheet to the bank and they can avail loan, and Supplyco is supposed to make repayment of the loan, which does not happen. And the Supplyco make the payment once the central government allots a share of MSP to the state government. And I want to draw the attention specifically to the fact that central government has failed to give 790 crores, which is due to the state government and which is due to the Supplyco. Now, because of the failure, there is no payment being done to the banks, and due to that, the CIBIL score of the farmers is also affected, and they do not get the money on time. Let me get back to the suicide note, sir. I quote, "It is the money of paddy which I cultivated with my sweat that was given as PRS loan. The government is solely responsible for repaying this loan in arrears. Banks are not disbursing new loans because of the government has defaulted on it. It is because of this I am taking my life. Therefore, it is only the government which is responsible for my death," unquote. The words in the suicide note is a direct reflection of the plight of the farmers our country and state is facing today. How many more lives of farmers will have to be lost for the government to wake up and make the payment which is rightfully due to the farmers? Also, paddy farmers in the state they are selling their products to the private rice mill owners at a much lower cost, which is about 20% of the farmers they are doing that. If the government is giving, Time is already over, it's not going on record now, please. Not going on record, please. Honorable Sri Babu Bhai, Jaisang Bhai Desai. Honorable members, please take your seat, Mr. John Britos. ऑनरेबल मेंबर्स, सिर्फ आप 3 मिनट बोलते हैं वही रिकॉर्ड पे जाता है, उससे अधिक बोलते हैं रिकॉर्ड पे नहीं जाता. प्लीज कन्फाइन योरसेल्फ टू 3 मिनट्स. ऑनरेबल श्री बाबू भाई जयसंग भाई देसाई. ऑनरेबल श्री बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, नॉट प्रेजेंट. ऑनरेबल श्री त्रिचू शिवाजी, रिक्वेस्ट टू एलोकेट एडिक्वेट फंड्स टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु for relief to people suffering due to cyclone rains. Sri P. Wilson will associate. Babu Bhai, I am going by serial number. 5th was J.B. Mathur ji, 6th was Babu Bhai Jason Bhai Desai, 7th Tiruchu Shivaji. Please. Honorable Tiruchu Shivaji. Mic of Honorable Tiruchu Shivaji, please, it's on now. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, the torrential rains, which is incessant for the past 4 days, has devastated Chennai, Thiruvallur, Shengalpet, Kanjipuram and Ranipet in Tamil Nadu. Sir, such a rain Tamil Nadu has witnessed only half a century before. The Michang cyclone, which triggered these rains, has now moved to Andhra Pradesh, but the impact is so worse that the people of Tamil Nadu are put to very big hardships.
Sir, the roads have become rivers because of the non-stop running waters, and the rivers have become like seas. The Kuvam and Adayar, which used to confluence with the sea, were not able to because sea water was gushing into the river, and all the water bodies are overflowing. Many tanks have been breached. Roads have been damaged to the extreme condition. Everywhere it is eroded because of the running water. However best the infrastructure of a city, sir, the fury of the nature is such hard and much worse that nothing can withstand that. So all the roads have been eroded, and the essential needs of the people were not able to be supplied, though the milk vendors or the medical facilities can move, but the roads were not accessible. And the state government, under the captainship of Mr. M.K. Stalin, the Chief Minister, the whole cabinet was on their heels. The corporation officials, workers, doctors, sanitation workers, fire service, rescue team, electricity board, everyone were working in a war-footed manner, sir. And sir, the foremost responsibility of a state government is to safeguard the lives of the people. So as a precautionary measures, electricity was suspended as a temporary measure which saved hundreds of people who would have met with electrocuted accidents. So along with that, essential needs were also supplied by the state government. But the impact is so worse, sir, that it cannot be repaired at the earliest. Sir, now that yesterday the Honorable Home Minister has had a telephonic conversation with the Chief Minister and he has appraised the situation, and now that the state government has requested for an interim relief of 5,000 crores, sir. So I urge the Union government, considering the condition of Tamil Nadu and the 5 districts in the capital, kindly release the interim relief of 5,000 crore as an initial interim relief, which would help the state government in their effort to safeguard the people of Tamil Nadu. Thank you very much. Thank you, Honorable Tiruchi Sivaji. You have already associated yourself. Yes, you have associated, people said. You have associated, the time is over now. Thank you, people said. Honorable Shri Ajay Pratap Singh ji, issue of distribution in PM Garib Kalyan Ann Yojana. सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान मिलेट्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मिलेट्स का नवीन नामकरण हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न के रूप में किया है। वर्ष 2023 को भारत के प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलेट वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री जी ने भारत को मिलेट्स को विश्व केंद्र के रूप में घोषित किया है। मिलेट्स में प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, मेजरी इत्यादि फसलों को शामिल किया जाता है। इन फसलों का जो खेती है लगभग भारत के 12 राज्यों में की जाती है। अकेले बाजरा की खेती ही भारत के लगभग 2.5 करोड़ किसान करते हैं। भारत में जो हमारी भोजन की थाली है, उस भोजन की थाली में पहले लगभग प्रति व्यक्ति प्रति माह 3 किलो मिलेट्स की खपत होती थी। अब ये बढ़कर 14 किलो तक पहुंच गई है। हमारे यहाँ 5 से 6% जो है लोग इसका उपयोग करते हैं और प्रधानमंत्री जी के कारण लगभग मिलेट्स की बिक्री में लगभग 30% तक वृद्धि हुई है। अगर हम भूख के आधार पर दुनिया का विभाजन करें तो एक ग्लोबल साउथ है जहां पर भोजन की समस्या है और दूसरा ग्लोबल नॉर्थ है जहां पर भोजन की प्रचुरता के कारण बीमारियों का सामना कर रहे हैं। इसका समाधान भी इस मिलेट्स में ही निहित है। मिलेट्स की खेती के माध्यम से हमारे किसानों की आर्थिक प्रगति का भी रास्ता प्रशस्त होता है और मिलेट्स की जो खेती है ये कम पानी की खेती होती है। 1-2 पानी में ही इसका उत्पादन हो जाता है और इसके कारण जो हमारा भूजल का जो स्तर है जो घटता जा रहा है उसकी भी सुरक्षा की जा सकती है। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिलेट्स पोषण युक्त है, मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है,
इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हम मिलेट्स उत्पादों को शामिल करें। इसके माध्यम से हम भारतवासियों के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकेंगे। मिलेट्स की अधिक से अधिक खपत होने के कारण किसान भी इसके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे। इसके माध्यम से गांव की भी जो आर्थिक समृद्धि है उसका भी मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। धन्यवाद माननीय अजय प्रताप जी। ऑनरेबल श्री वाइको, concern over frequent attacks and arrest of Indian fishermen by Sri Lankan Navy. Mr. Deputy Chairman, sir, thank you very much for the opportunity given to me. Sir, Sri Lankan Navy is continuously attacking our Tamil fishermen. About 800 fishermen were shot dead and thousands of fishermen were brutally attacked and their boats and fishing trawlers were damaged and fishing nets destroyed in the past. Recently, they have started capturing the boats and put them into action. Unfortunately, it has become a real story. There have been several incidents of Sri Lankan Navy personnel even firing at Indian fishermen in the Pak Strait and seizing their boats, damaging their boats and high-handedness by the Sri Lankan forces. Recently, 22 fishermen were arrested by Sri Lankan Navy. The frequent arrest and seizure of boats had shattered the livelihood of many fishermen. I would urge upon the Union government to take urgent steps to secure release of all the fishermen and their boats unconditionally. The government should also put diplomatic pressure on the Sri Lankan government for giving compensation and solatium to the next of kin who were shot dead and boats damaged by the Sri Lankan Navy. They should hold a high-level talk to find a permanent solution to this non-stop harassment to our fishermen by the Sri Lankan Navy. So Tamil Nadu fishermen, are they not the citizens of India? If they are citizens of India, what Navy is doing there? It is sitting like a lame duck in the Bay of Bengal. Thank you. Honorable Sri GVL Narsim Rao, concern over attempts to ridicule Sanatan Dharma. Please. Thank you, sir. Sir, a minister in the state government of Tamil Nadu indulged in hate speech against Sanatan Dharma and Hindu religion. I quote what he said. Sir, Sanatan Dharma is like malaria and dengue, and so it must be eradicated and not opposed. These are statements by a minister in a state government. And sir, another minister in the same state government, higher education minister, said the purpose of formation of INDIA alliance is for the eradication of Sanatan Dharma. This is the agenda. Is this the kind of anti-India agenda that they want to pursue? So, another minister in Karnataka government, who also happens to be the son of Congress president, who is also a leader of the opposition in Rajya Sabha, he supported those comments. This is the agenda of INDIA alliance. Sir, this constitutes hate speech. Honorable Supreme Court in its directions clearly stated that offences under 295A, under 505, 153A, 153B, they all constitute hate speech. Sir, deliberate and a malified act intended to outrage religious sentiments. This is what it was intended for. There was also an attempt to create public mischief. Therefore, I call upon the state government, Tamil Nadu, to, on its own, register FIR against the same ministers who spoke against Sanatan Dharma, and also dismiss these ministers from the state government, because what they have publicly stated is a violation of the oath they have taken under the Constitution. The Constitution allows every religion, every member, every sect to practice its faith and to even propagate it. And here you have ministers in the state governments who are campaigning against Sanatan Dharma and calling for its eradication.
So therefore, sir, I appeal that cases should be booked against the concerned ministers and they must be dismissed without any further delay. So this is nothing but an act to destroy the fabric of religion in India. This is to destroy social fabric. If this is an agenda for any political party, that will be dangerous to India. Therefore, I appeal, I demand an apology. I demand an apology from the... Not going on record now. Time is over. Your time is your place. Honorable Binay Biswam. Honorable Binay Biswam. Please. Honorable Binay Biswam. Please. Honorable Binay Biswam. Your subject is please demand to provide decent wages along with the meaningful engagement stems to all government-sponsored distance workers. Let the House in order. Please. Let the House in order, sir. Please speak. It will be in order. Please speak. Let the House in order, sir. Please. Please speak. Please, there is no discussion. Honorable Tiruchi Shivaji, please take your seat. Please take your seat. All the members who are standing, please take your seat. You please speak. So I begin when the House... Please, Binay Biswamji, please speak. Yes, sir. Thank you, sir. Please. Thank you, sir. Please, Binay Biswamji, please speak. Binay Biswam, please. He totally give the false So I am going on another name. Please, Binay Biswamji, then you... Yes, please, sir. Please. Now my time begins. Yes. Sir, I stand before you. Please, nobody, please speak. Sir, please begin my time now. It has already begun. The time has already begun. No, please. no, just now I began. Please, speak, please speak. Sir, please. I stand before you to bring to the plight of the scheme workers of the country. They are in lakhs in numbers. They belong to the ASHA workers, Anganwadi workers, and midday meal workers. Sir, the government and this House has a duty to look deep into their living conditions. Sir, those people are not living. They are simply surviving on paltry wages. We talk about them in high words like global health leaders, warriors for the country. Sometimes we name them during COVID days. But when the livelihood comes, we always forget them. High time to think about them. Sir, the ASHA workers, the accredited social health activists, they are doing immense service for the nation. In every field of life, they are the first point of healthcare, social security and everything. But their concerns are not always. So Anganwadi workers, they are the first meeting point for the children of the country. They teach them, they feed them, and they open their eyes to the world. But what we do for them? Nothing to them, sir. The same way, the midday workers, meal workers, midday meal, they work for the food security also. But lakhs of them are counting their days for their decent wages, sir. High time this government should pay attention to them. We call them as volunteers. Calling them volunteers, we deny them the right of the workers. We have to treat them as workers. We have to see that their wages are fixed, a decent wages to live. And we have to treat them and make their engagement conditions a decent one. Not going on record now. Please. Honorable Sri Sushil Kumar Modi, concerned over increasing incidents of suicide, deaths of students in higher educational institutes. Honorable Sushil Kumar Modi. उपसभापति महोदय, राजस्थान के कोटा में और इस वर्ष 26वां आत्महत्या की घटना घट चुकी है। पिछले एक साल में और आत्महत्या की 26 घटना और कोटा राजस्थान में घट चुकी है। और ये केवल इसी वर्ष नहीं, पिछले 5-6 वर्षों में प्रति वर्ष 25 से 30 नौजवान और आत्महत्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो IIT, IIM, NIIT,
और जो देश के सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर भी प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार के लिए चिंता का विषय, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान आत्महत्या करने के लिए क्यों बाध्य हो रहे हैं। कोटा राजस्थान में जो लड़के मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए आते हैं, उन पर इतना प्रेशर होता है, इतना दबाव होता है उत्तीर्ण होने के लिए कि वो लोग आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और उसी प्रकार IIT, IIM वगैरह जो उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ पर भी बढ़ती हुई आत्महत्या की घटना ये चिंता का विषय है। मैं सरकारों से ये मांग करता हूँ कि एक तो एक आयोग का गठन किया जाए जो इस बात की जांच करे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में नौजवान कोचिंग संस्थानों में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, उनकी बहाली की जाए ताकि वैसे लड़के जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उनकी वो काउंसलिंग कर सके। ऐसे केंद्रों में मेंटल हेल्थ क्लिनिक की भी स्थापना की जाए ताकि जो लड़के डिप्रेशन में हैं वो लड़के वहाँ जाकर अपना इलाज करा सकें या काउंसलिंग प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ जो IIT, IIM वगैरह के जो कोर्सेज हैं, खास करके कोचिंग के, उसके बारे में पुनर्विचार किया जाए कि इतनी बड़ी, इतना प्रेशर है और इस प्रकार का कठिन सिलेबस है कि उसको उत्तीर्ण होना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो सरकार को उसके पूरे सिलेबस को भी रीडिज़ाइन करने के बारे में विचार करना चाहिए। और ख़ास करके कोटा और अन्य कोचिंग संस्थानों में हर किसी का जो नामांकन हो रहा है, पैसे के लिए कोचिंग संस्थान जो भी लड़के वहाँ पर आते हैं उनका वो एडमिशन ले लेते क्योंकि उससे उनको पैसा मिलता है। तो उसके बारे में भी और रोक लगाई जाए। जो बहुत मेधावी छात्र हैं, जो टाइम इज थैंक यू। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, इशू ऑफ इंटरवेंशन बाय बिग हाउसेज इन MSME सेक्टर। क्या विषय है जी? इशू ऑफ इंटरवेंशन बाय बिग बिजनेस हाउसेज इन MSME सेक्टर। पता ही नहीं, हमें तो 0 आवर की सूची में भी नहीं है। आपका 0 आवर में यही लिस्टेड है? नहीं लिस्टेड है। डॉक्टर एल हनुमंतैया demand to take preventive steps to address rising problems of malnutrition and anemia across the country. Please, माननीय सदस्यगण, जिनका नाम सूची में है उसी अनुसार मैं बुला रहा हूँ। प्लीज टेक योर सीट। सर, जिनके नाम नहीं है मैं नहीं बुला रहा हूँ, जिनके नाम है वही बुला रहा हूँ। प्लीज, डॉक्टर एल हनुमंतैया। सर, थैंक यू चेयरमैन सर। प्लीज, आई राइज टू मैडम 1 minute. Sir, I rise today to urgently address the pervasive issues of malnutrition and anemia plaguing millions of people across the country, sir. Sir, despite economic progress, despite economic progress, our nation grapples with alarming rates, particularly affecting vulnerable population like children, women, and the marginalized sections of the society, sir. Sir, in the latest NFHS report, data at 1921, the prevalence of anemia has shown a significant increase, with children aged 6 months to 5 years experiencing. हम 11 लाख किसानों के लिए, तो 11 करोड़ किसानों के लिए 2.81 लाख करोड़ रुपया DBT के तहत हम पहुंचाए सर। अभी ये योजना विश्व का अत्यंत बड़ा योजना है। DBT के तहत योजना जारी की है, इसे विदेश में भी इसका तारीफ हो रही है सर। हम ये योजना देने के समय राज्य सरकार से आंकड़ा मांगे थे। उसी समय हमको 11 करोड़ आंकड़ा मिला था। उसके बाद
इसी में 2 करोड़ किसानों फर्जी निकले। उसके बाद हम किसानों में जागृति की है, मोबाइल ऐप बनाए हैं एंड वेबसाइट में खुद वो एप्लीकेशन डालने के लिए मौका दिया है। अभी हम ई-केवाईसी के तहत फेस आइडेंटिफिकेशन करने का भी प्रावधान इसी में किया है। इसीलिए हमारा सरकार का इच्छा है किसान सम्मान योजना को सैचुरेशन पॉइंट में लाना, सब किसान को वो देना। ऐसे करके हम अभी हमारे काम शुरू किए हैं सर। इसीलिए ये बड़ा योजना विदेश में भी इसका तारीफ हो रहा है सर। सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों में किसानों को आर्थिक संबल और उन्नति करने के लिए उनकी फसल को समर्थन मूल्य देने के लिए एमएसपी का जो मूल्य बढ़ाया है, किसानों को अधिकतम फसलों पर एमएसपी दी और अधिक से अधिक फसलों की खरीद की घोषणा की। कुछ फसलें ऐसी भी रही जिसमें प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी को 1.5 गुना से भी अधिक मूल्य पर उनकी फसलों की खरीद की। मैं आपसे माननीय मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि पिछले 9 वर्षों में कुछ किन किन फसलों को 1.5 गुना से अधिक एमएसपी पर उन्होंने खरीदने का काम किया और 9 वर्षों में कितनी फसलों की उन्होंने किसानों से खरीद की और किसानों को लाभ दिया और उनका आर्थिक उन्नति में उनके सम्मान को बढ़ाने में सहयोग किया। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को उनके उत्पाद में लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर 22 मैंडेटेड कृषि फसलों के लिए एमएसपी दे रही है सर। हमारे सरकार 2018-19 में बजट में हम बताए थे उत्पादन के लागत का 1.5 गुना स्तर पर हम ये घोषणा किया है, उसके आधार पर हम एमएसपी देना है ऐसा हम बताए थे। उसका आधार पर 2018-19 में मैंडेटेड खरीफ, रबी और अन्य बागवानी फसलों के लिए एमएसपी ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन का लागत पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ निर्धारित की जाती है सर। वर्ष 2014-15 में ये खाद्यान्नों का खरीदे में 759.44 लाख मीट्रिक टन था। अभी ये बढ़कर सर ये साल लास्ट ईयर में 2022-2023 में 1062.69 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई है सर, जिसमें 1.6 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ हुई है एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड 1.06 lakh crores in 2020-23. It was 1.06 crore in 2014 में था। अभी वो बढ़कर 2.2 लाख करोड़ तक पहुंच गए सर। हर साल ये बढ़ रही है एंड एमएसपी के तहत हम अभी ज्यादा खरीद हो रही है। दलहन तिलहन में हम इसका सीलिंग को निकाल दिया है। 100% हम दलहन को अभी देश में खरीद रहे हैं, इसीलिए हर साल वो खरीद ज्यादा हो रही है एंड उसका मूल्य भी ज्यादा हो रही है। श्रीमती रंजीता कोली। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री साहब से जानना चाहूंगी कि सरकार ने चेहरे को ऑथेंटिकेशन की सुविधा द्वारा ई-केवाईसी शुरू की है। क्या किसानों ने इसका उपयोग किया है? यदि किया है तो क्या स्थिति है? हम स्टेट पर निर्भर थे, स्टेट में किसानों को आकड़ देना था, वो फिजिकली वेरिफिकेशन करना था, इसी में फर्जी हुआ। उसके बाद हम 13th इंस्टॉलमेंट के बाद हम किए सर आधार लिंक्ड किसान सम्मान योजना देने को हम तय किया है। उसके बाद 15th इंस्टॉलमेंट में अभी हम दिया हुआ इंस्टॉलमेंट में
ई-केवाईसी किया है। ई-केवाईसी के तहत वो तो हम फेस आइडेंटिफिकेशन करने का घोषित किया है। इसी में ज्यादा से ज्यादा किसान अभी जुड़े हैं एंड 100% ऑथेंटिकेशन के साथ वो हो रही है सर। एंड इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस, इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल्सो इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया सर। इसीलिए ई-केवाईसी में अच्छा हो रही है एंड सब किसानों इसके साथ जुड़ रही है। ये बहुत इजी है, हमारा मोबाइल ऐप में गूगल डाउनलोड करना एंड डाउनलोड करके हम उसको वो तो प्ले स्टोर में गए तो कोई भी किसान हमारा खेती में रुक के खेती में खड़े होके वो कर सकते हैं। ऐसा एक ई-केवाईसी हमारा सरकार बनाया है। अधीर रंजन चौधरी जी। सर, हम सब जानते हैं कि ये सरकार ने 3 कृषि कानून लाने की उपरांत सारे देश के किसानों ने इकट्ठा होकर ये किसान विरोधी 3 कानूनों के खिलाफ जो बगावत छेड़ी थी। आपका प्रश्न क्या है सर? उसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री जी ये भी कहते कि उनकी तपस्या में कोई गलती हुई थी, तो शायद तपस्या भी ठीक हो गए हैं। लेकिन उस समय किसानों ने ये मांग किया था कि एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल राइट की दर्जा दिया जाए। मैं सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि एमएसपी की लीगल राइट देने में ये सरकार कोई फैसला लिया है? क्योंकि तोमर साहब, आप जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में रोजाना 35 किसान गरीबी के चलते खुदकुशी भी कर रहे हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस हालत में एमएसपी के लीगल राइट की, एमएसपी और लीगल राइट, इस मुद्दे पे आप जवाब दीजिए। लोगों को भोजन मिल रहा है। आज स्वामीनाथन साहब जीवित नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं जब भी एमएसपी की बात होती है तो स्वामीनाथन साहब को याद करना ही चाहिए। वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय कृषि सुधारों की दृष्टि से स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था और उस समय वाजपेयी जी की सरकार के टाइम पर वो रिपोर्ट नहीं आ पाई थी। 4 में सरकार बदल गई। 2007 में माननीय मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे और उस समय ये रिकमेंडेशन उनके समक्ष प्रस्तुत की गई। तदुपरांत सरकार ने कृषि मंत्री और बाकी लोगों का एक ग्रुप बनाया रिकमेंडेशन पर विचार करने के लिए, और उस समय स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंडेशन तो 201 की थी, जिनमें एनडीए सरकार 200 पर काम कर रही है, लेकिन प्रमुख रिकमेंडेशन थी एमएसपी की, जिसमें स्वामीनाथन साहब ने कहा था कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करना चाहिए। 2007 के बाद 14 तक यूपीए की गवर्नमेंट रही और यूपीए की गवर्नमेंट के समय इस रिकमेंडेशन को नहीं माना गया, ये निरसन सूची में डली रही। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उसके बाद इस रिकमेंडेशन पर काम हुआ और आज एमएसपी 50% मुनाफा जोड़कर लागत पर घोषित की जाती है। और जैसा मंत्री जी ने बताया कि अभी तक लगातार प्रोग्रेस है। उस समय 1 लाख करोड़ रुपया खरीद पर खर्च होता था, आज 2,28,000 करोड़ रुपया खरीद पर खर्च होता है। और साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन की बात की, उस समय जो समिति बनाई गई थी, वो समिति में 3-4 विषय थे, जिसमें प्राकृतिक खेती भी थी, बाकी सुधार भी थे और एमएसपी को और ठीक प्रकार से किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके मैकेनिज्म पर विचार विमर्श करने की बात थी। उस कमेटी की बैठक लगभग 30-35 बैठकें हुई हैं, अभी रिकमेंडेशन नहीं आई है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 संजय काका पाटिल। माननीय मंत्री जी।
क्वेश्चन नंबर 27 लाओ श्री कृष्णा जी। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Sir, Andhra Pradesh is going through severe drop, sir. There is a rainfall deficit ranging from 21% to 51% across different districts of Andhra Pradesh, sir. Specifically, coming to my district of Palnadu, specifically coming to my district of Palnadu and Guntur, there is a drastic reduction in sowing area of chili and cotton, sir. 48% of sowing in cotton has come down, 45% of sowing in chili has come down. Crop insurance should be a major relief for the farmers against erratic rainfall and climate change, sir. Can I ask again? Sir, Andhra Pradesh is going through a severe drought, sir, in 103 mandals. There is a rain deficit, sir. Rainfall deficit of 21% to 51% across the... Sir, again, Andhra Pradesh is not being heard, sir. लगा लो, हेडफोन लगा लो। ओके, बोले, एक दोबारा बोल ले। Sir, the question is that the chili farms... Can you hear? Can I ask again, sir? Yes, आ रही है आवाज। Andhra Pradesh is going through a severe drought in 103 mandals, sir. There's a rainfall deficit of almost 21% to 55% across different districts of Andhra Pradesh. Specifically, coming to my district of Guntur and Palnadu, there is a drastic reduction in sowing area of cotton and chili, sir. It has gone down by 48% in cotton and 45% in chili, sir. Crop insurance should come as a major relief for farmers against erratic rainfall and climate change, sir. So, the question to the minister is, chili crop, which comes under the yield-based, whereas it is sowed under the irrigated base, but it is classified as yield-based under the insurance, sir. So, the question for you is whether government is looking that chili crop can be moved from yield-based to the irrigated weather-based. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। देश भर में किसानों को एक कवच प्रदान करता है कि किसान के अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो फसल बीमा के माध्यम से वो उसको कवर होता है। और जैसा कि आंध्र प्रदेश के विषय पर आपने पूछा है कि उनको मिर्ची और उसमें वेदर बेस्ड आधार पे करने के लिए, तो मुझे आपसे इसमें ये कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर अभी जिस तरह से किया जा रहा है, तो इसमें राज्य सरकार पूर्ण रूप से फसल बीमा के लिए कौन सी पैटर्न को अपनाना है, जो हमने उनको मॉड्यूल दे रखे हैं, उस मॉड्यूल के आधार पर वो करते हैं। और उसमें राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि कौन से नोटिफिकेशन के अंदर उसको किस तरह से करना है, तो वो राज्य सरकार वहां से जिस प्रकार से भी करना चाहे, वो अगर उस मॉड्यूल को अपनाना चाहते हैं जिसमें वो चाहे उसमें वेदर बेस्ड है, तो अगर वेदर बेस्ड पे जाना चाहता है राज्य सरकार उसको निर्धारित कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार इसके अंदर दोनों मॉड्यूल को राज्य सरकार को दे रखा है। Sir, during difficult times like this drought situation, sir, Krishi Vignan Kendras play a major role in encouraging farmers and hand-holding farmers to go for crop insurance and crop diversification, sir. Sir, coming to my constituency of Palnadu, we have proposed a Krishi Vignan Kendra 3 years back, sir, in the village of Jangameshwarapuram in Gurjala Mandal. So 3 years back when we asked, they said, because it's a corona time, we have not been deciding on the Krishi Vignan Kendra, sir. But it's been 3 years, we've been following it up in various offices, sir. But still there is no response to it, sir. So I request the minister to whether there is a policy by the union government to not sanction any KVKs, or if they are going to sanction any KVKs, or if they are going to do it before the 2024 elections. सब अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है
क्वेश्चन के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये सीधा आपके जो क्वेश्चन से संबंधित विषय था उस पर नहीं है, आगे आपको इसका जवाब भेज दिया जाएगा। श्रीमती असनैन मसूदी जी। जनाब बहुत शुक्रिया। जनाब जैसा कि आप जानते हैं कि सेब उत्पादन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए एक रीढ़ की हड्डी की मईशत के लिए रीढ़ की हैसियत रखती है, तो मेरा ये सवाल होगा कि क्या सरकार जम्मू कश्मीर में सेब की पैदावार कोई 30 मिलियन टन के करीब होती है, क्या उसको PMBY में के दायरे में लाना चाहती है ताकि कंसेशन रेट्स पर जो प्रीमियम रेट्स हो उस पर ये भी इस जो सेब का जो सन्नत है तो फ्रूट जो इंडस्ट्री है उसको भी उसके दायरे में लाया जाए। और दूसरी बात है कि ये उम्मीद है कि सरकार पहले अवेयर होगी कि हेल स्टार्म की वजह से या कहीं कहीं आफाती जो भी समावती आफी होती है उस वजह से ये फसल में और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना है, तो ये एक बड़ा एक होगा, एक अच्छा एक इंसेंटिव होगा वहाँ के फार्मर्स के लिए और एप्पल ग्रोवर्स के लिए अगर सेब को इसके दायरे में लाया जाए और कंसेशनल जो प्रीमियम रेट्स है उन वो अप्लाई हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहती है हमेशा। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब सेब का अगर भाव कोरोना के समय में कम हुआ था तो उस समय भारत सरकार ने उसकी खरीद की थी, आपको ये अच्छी तरह से ध्यान में है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसको कवर करने के लिए निर्णय निश्चित रूप से राज्य सरकार लेती है, इसमें राज्य सरकार का पूर्ण अधिकार है राज्य सरकार के अंदर। और मैं यही कह सकता हूं कि भारत सरकार की ओर से इस प्रकार कोई अगर विषय आएगा तो निश्चित रूप से गंभीरता विचार। प्रश्नकाल समाप्त। कल माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद आइटम नंबर 2 श्री कृष्णपाल सामने कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी। से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय जी। आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करांदलाजे जी। I lay the papers shown at serial number 5 of the revised list of business in the Lok Sabha for today on the table of the House. Item number 6, श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख मद संख्या 6 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 7 श्री अजय कुमार जी। लिखित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on 4th December 2023 passed the Post Office Bill 2023. Sir, I lay on the table the Post Office Bill 2023 as passed by Rajya Sabha on the 4th of December 2023. Item number 9, Mahasaji ji. Sir, I lay on the table a copy duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the Constitution 128th Amendment Bill 2023 passed by the Houses of Parliament and assented to by the President as the Constitution 106th Amendment Act 2023 since a report was last made to the House on the 19th of September 2023. Item number 10, Shri Nishit Pramanik ji.
महोदय, आपकी अनुमति से मैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में श्री सुशील कुमार सिंह संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3112 के 8 अगस्त 2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धिकरण में हुए विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। शून्यकाल श्री M.K. राघवन जी। M.K. राघवन, सॉरी प्लीज, आपको जी। I wish to draw a grave disparity shown to Kerala. Today only Kerala and another states are not allotted an AIIMS-like institute. The government of Kerala had in advance identified Kinalur in my constituency Kozhikode sufficient land for establishing this prestigious medical institute. I have also repeatedly followed this for the last very many years. Yet it is a dream come true. Sir, the availability of the AIIMS at Calicut, a region which is deprived of advanced specialized medical centers, will be a major boon to the people of 7 districts in the Malabar region of Kerala and some regions of the nearby states like Karnataka and Tamil Nadu. Sir, the district is notorious for frequent Nipah and other virological outbreaks. The entire Malabar region is also prone to various lifestyle diseases including cancer, cardiac, diabetes, respiratory ailments, and others. Sir, the setting of the AIIMS in Kozhikode will enhance the healthcare as well as research facilities to address common disease apart from helping people get treatment at doorstep. Sir, I strongly request both the Health Minister and Finance Minister to include the setting up of the proposed AIIMS for Kerala at Kozhikode in the next budget proposal positively. Thank you, sir. श्री प्रद्युत बरदोलोई जी। I raise my concern and I would like to register my grave concern and urge the relevant departments of the Government of India, especially Ministry of Home and Healthcare and Social Justice Department, to take urgent action because there has been proliferation of the drugs use and substance abuses on the rise in this country. So you'll be surprised to know that in the northeastern region, in certain remote areas now, in the states of Manipur, in the states of Arunachal Pradesh and Assam and even Mizoram, so extensive poppy cultivation is expanding. And not only poppy cultivation, but also their processing plants have been set up. Thereby, there have been very rise of the different types of drugs. एक्सीडेंट और उसको इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है। अगर इसी में 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, अगर उनको इररिकवरेबल 2 आईज चले गए, दैट इज अ परमानेंट डैमेज टू द आईज, देन 1 लाख का इंश्योरेंस मिल सकता है। लेकिन जो कुछ उनको नहीं दिया वह था, उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं इस सदन से, इस सौतेले और इस दोहरे आचरण का आधार क्या है? क्या वह जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते, उनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें। And also, sir, the ministry should put up rehabilitation center, counseling, and add a new dimension so that the drug abusers can be put at bay and counseling can be done and rehabilitation of the drug users can be taken up, sir. Thank you. Thank you. Shri N.K. Premchandran ji. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. So this is the first time in my parliamentary experience I got the ballot as number 1, but I couldn't make it because of my learned friends. Sir, thank you very much for providing me this opportunity. The matter is pertaining to my constituency, the Greenfield National Highway 744, starting from my constituency, Kadampa to Onam Paripalli to Edaman, Aringav, Tenmala and Chengotan to Tirumangalam
that is National Highway 744, Greenfield Highway has been declared by the Government of India. 16, Shri Sanjay Raut. Honorable Minister, Supplementary 1, Shri Sanjay Raut. सर आजकल मैं देख रहा हूं बैंकों में, देश भर के बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड्स, फर्जी के केस सामने आ रहे हैं, लेकिन उसमें अगर सरकार की एजेंसी भी शामिल हो तो चिंता की विषय है। सर, केंद्र सरकार ने मल्टीपल इंश्योरेंस और पेंशन की बहुत सी योजनाएं शुरू की है आम जनता के लिए, लेकिन जो तथ्य, जो फैक्ट सामने आया है, मुझे लगता है ये इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम, ये बिगेस्ट बैंक का स्कैम उसमें नजर आ रहा है। संजय जी, आस्क योर पॉइंटेड क्वेश्चन। सर, ये जो बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है, मेरी जानकारी से जब कोई ग्राहक 10-15 साल के लिए पॉलिसी साइन करता है तो प्रीमियम के लिए सहमति भी देता है, जो उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। अधिकांश ग्राहक 2 से 3 वर्षों में के बाद प्रीमियम का भुगतान बंद कर देता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनियों के पास बहुत सारा अनक्लेम फंड पड़ा हुआ है और बैंक दावा करता है कि ये जो आकस्मिक बीमा कवरेज है, जो बैंकों द्वारा चार्ज की गई प्रीमियम की राशि सरकार द्वारा खातों धारकों की सामाजिक सुरक्षा पर खर्च की जाती है। संजय जी, प्लीज आस्क योर सप्लीमेंट्री। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, गत 3 वर्षों में दुर्घटना बीमा क्लेम के रूप में कितने परिवारों को आपने ये राशि वितरित की है? ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, सभागृह के ज्येष्ठ सदस्य संजय जी राउत, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेज किया है। सरकार के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण स्कीम्स है जो गरीब लोगों के लिए और अनप्रिविलेज लोगों के लिए चलती है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो और पेंशन योजना जो अटल पेंशन योजना है। इनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो लास्ट 3 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 3 साल में जो कलेक्शन हो चुका है या इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं अभी तक के क्यूमुलेटिव अगर इफेक्ट देखें तो 18 करोड़ 50 लाख 71 हज़ार इतना लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है जिन्होंने विथ मैंडेट इंश्योरेंस का रहा है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से 41 करोड़ 59 लाख लोगों को फायदा क्यूमुलेटिव हो चुका है। अगर देखें ये दोनों स्कीम के माध्यम से अगर जनता को जो फायदा मिल चुका है वो 7,46,675 यानी क्यूमुलेटिव मैं बात कर रहा हूँ, और अगर अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट भी 14 करोड़ 32 लाख से 274 मिला है। तो ऐसी ये 2 स्कीम्स जो प्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए है, उनके लिए वैसा कोई ये नहीं है कि जो बैंकिंग के पास ज़्यादा ये है। पहले 3 साल में तो ये स्कीम लॉस में चल रही थी और बाद में रिव्यू करके इसी को अभी जो प्रीमियम 12 रुपीज़ था वो 20 रुपये किया है, और जो जीवन ज्योति बीमा में 330 रुपये था अभी 436 रुपये किया है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री संजय राउत। प्रश्न अलग था, आपने जवाब अलग दिया है। मैंने ये पूछा था कि विदाउट कंसेंट आप बैंक अकाउंट से प्रीमियम आप जमा कर रहे हो, ये मेरा सवाल था, लेकिन मैं आगे पूछता हूँ। हाँ दीजिए। क्लियर मैंडेट है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के अगर कस्टमर से पैसा लेना है तो उनका सिग्नेचर लेना जरूरी है, उनका कंसेंट लेना जरूरी है। उसके सिवाय पैसा काटा नहीं जाता और उनका इंस्टॉलमेंट नहीं लिया जाता। दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। श्री संजय राउत, सेकंड सप्लीमेंट्री। एक्सीडेंट इंश्योरेंस योजना है और सरकार उसमें मुआवजा देती है।
लेकिन एक्सीडेंट में व्यक्ति के हाथ, पांव, आँख या ऑर्गन डैमेज होने पर आप मुआवजा देते हैं या उनकी मौत होनी चाहिए मृत्यु के बाद ही देते हैं, क्लियर नहीं है। एक्सीडेंट बीमा योजना के बारे में पूछा। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, ये एक्सीडेंट योजना में क्लियर है, जिसमें अगर डेथ हो गया, इट इज़ एक्सीडेंटल डेथ, और एक्सीडेंट का डेफिनेशन भी दिया है गवर्नमेंट के माध्यम से, एक्सेप्ट सुसाइड, ऑल डेथ्स आर कंसिडर्ड एज एक्सीडेंट डेथ एक्सेप्ट सुसाइड एंड एक्सेप्ट विलनेस। मीन्स एक्सीडेंट होना चाहिए, देयर शुड बी हिट फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज एक्सीडेंट। तो अगर सुसाइड किया तो एक्सीडेंट नहीं माना जाता। इवन आई एम सेइंग मर्डर भी किया तो दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट, और उसको इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है। अगर इसी में 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, अगर उनको इरिकवरेबल 2 आईज चले गए, दैट इज अ परमानेंट डैमेज टू द आईज, देन 1 लाख का इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर दोनों हाथ चले गए तो उनको 1 लाख मिल सकता है इंश्योरेंस, और दोनों पाँव चले गए तो उनको 1 लाख इंश्योरेंस मिल सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक आंख चली गई और एक हाथ चला गया, स्टिल ही विल गेट इंश्योरेंस ऑफ 1 लाख रुपीज। कभी कभी एक हाथ और एक पाँव चला गया, कटा गया, तो भी उनको इंश्योरेंस 1 लाख का मिलता है। लेकिन इसमें 2 ऑर्गन्स इज इसेंशियल इन दिस रूल। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री धनंजय महादिक। Thank you, Chairman, sir. I would like to know from the Minister through you, sir, what is the nature of the scheme of Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana? Thank you, sir. Honorable Minister. सर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जैसा मैं पहले ही बताया कि ये पुअर लोगों के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन के लिए और जो अंडर प्रिविलेज है लोगों के लिए है। इस स्कीम में ओनली 20 रुपए का प्रीमियम 1 साल से दिया जाता है, और इसमें भी समझो 1 जून से योजना चलती है, 1 जून से 31 मई तक। अगर किसी ने ये योजना में जैसा 3 महीने के बाद किया तो उसको 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद भी उनको इन्वॉल्व हो सकते हैं। और मैंने जैसे बताया, देयर शुड बी अ परमानेंट डैमेज ऑफ द ऑर्गन। अगर ऑर्गन हो गया तो उसमें आईज हो, हैंड्स हो, फुट हो, तो इसका फायदा मिल सकता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो भी 2 लाख उनके जिसके ऊपर नॉमिनी है उनको ये मदद मिल सकती है। और अगर मैं बताना चाहता हूं तो अभी तक इस योजना के माध्यम से 2115 करोड़ का राशि डिस्टर्बर्स हो चुके, 2502 करोड़ की राशि यानी लोगों को मदद मिल चुकी है। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलाता देव। थैंक यू चेयरमैन सर, मुझे सप्लीमेंट्री में बोलने के लिए मौका देने के लिए। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, भारत में कितने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी काम कर रहे हैं, और देखा जाए तो मैं तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछूंगी कि यहाँ जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होते हैं सालों में, उसमें कितना परसेंटेज रिन्यूअल अमाउंट लेना चाहिए, कोई गाइडलाइन है क्या? अगर है तो उस हिसाब से वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि मुझे जितना पता है जो सीनियर सिटीजन वगैरह होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिन्यूअल अमाउंट आता है, कभी कभी डबल हो जाता है रिन्यूअल अमाउंट। ये तो मरता क्या ना करता। ये तो हम उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि मेरे स्टेट में भी ऐसा हो रहा है, मगर ये हमारे यहाँ पर बिजू स्वास्थ्य कल्याण कार्ड सर्वोच्च न्यायालयातल्या याचिकेमध्ये हस्तक्षेप करावा आणि हे आरक्षण टिकण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावा। पण दुर्दैवानं त्या ठिकाणी तिथं लक्ष दिलं गेलं नाही त्या मागणीकडे, आणि 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी या मराठा समाजाच्या आरक्षणाला दुर्दैवानं सुप्रीम कोर्टामध्ये स्थगिती मिळाली। अध्यक्ष महोदय, याच्यानंतर 18/3/2021 आणि 14/12/2022 या 2 वेळेसही हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टामध्ये न टिकण्यामागचं प्रमुख कारण होतं की आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त ओलांडल्या गेल्यामुळे हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवलं होतं। मी या दोन्ही वेळेस मागणी केली होती की केंद्र सरकारनं आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा वाढवण्याच्या दृष्टीने तशा पद्धतीने संवैधानिक दुरुस्ती आणून ती आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त वाढवावी। त्याचबरोबर
नोव्हेंबर 2023 रोजी सुद्धा खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून सुद्धा प्रायव्हेट मेंबर बिलच्या माध्यमातून सुद्धा ही आरक्षणाची मर्यादा संविधानिक दुरुस्ती करून वाढवावी अशा प्रकारची मागणी मी लोकसभेकडे केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, एवढंच नाही, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या शिष्टमंडळानं महामहिम राष्ट्रपती महोदयांची सुद्धा भेट घेऊन मराठा आणि धनगर समाजाचं आरक्षण मिळण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारनं लक्ष घालावं, आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी यासाठी भेट घेतली. त्यांना सुद्धा एक तशा प्रकारचं निवेदन त्या ठिकाणी दिलं गेलंय. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होतोय. 24 डिसेंबर पर्यंत सरकारनं पहिल्यांदा एक मुदत दिली, राज्य सरकारनं दुसऱ्यांदा एक मुदत दिली, पण दुर्दैवानं जो शब्द दिला तो राज्य सरकारकडून पाळला गेलेला नाही. त्यामुळं याच्या बाबतीत मराठा समाजामध्ये, धनगर समाजामध्ये प्रचंड प्रमाणात त्या ठिकाणी असंतोष आहे. आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे माझी विनंती आहे की आता लोकसभेचं अधिवेशन चालू आहे, तर केंद्र सरकारनं तातडीनं संविधानिक दुरुस्तीचं विधेयक आणून आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त करून मराठा समाजातील युवकांना त्या ठिकाणी न्याय द्यायचं काम करावं, ही मागणी मी आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे करतो. श्री टी.आर. पारिवेंद्र महोदय, मैं एसोसिएट कर रहा हूँ. ओके ओके, सेंड द स्लिप. श्री टी.आर. पारिवेंद्र जी, यस प्लीज. Thank you, Chairman, for giving me the opportunity. 2 मिनट में अपनी बात कहिए, प्लीज. To raise an important issue for a speedy implementation of Women Reservation Bill named Nari Shakti Vandan Abhiyan, which was passed in the Parliament on 20 September 23 during the special session. The said bill has many special features like 1/3 of the seats in Lok Sabha and state assemblies and the legislative assemblies including SC/ST seats. Further, seats reserved for women will be rotated after each delimitation as determined by law made by the Parliament, through which the government made all women more powerful and self-empowered in the decision-making body. In this context, I would like to emphasize that even though the Honorable Union Home Minister has clarified during the discussion on the bill that reservation for women will not be implemented in the upcoming 2024 election. The reservation will be effective after the census conducted after the commencement of the bill has been published. In view of the above, I urge upon the Union government to take early action to conduct census and to constitute delimitation commission to decide which seat will go to the women after the delimitation exercise. थैंक यू. श्री विष्णु दयाल राम जी. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 जिला आते हैं, पलामू एवं गढ़वा. ये दोनों जिले आकांक्षी जिलों की सूची में हैं और यहाँ की 80% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है. परंतु दुर्भाग्यवश ये दोनों जिले रेन शैडो एरिया में पड़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि प्रतिवर्ष यहाँ तो या तो अतिवृष्टि होती है या अनावृष्टि होती है, जिससे फसलें मारी जाती हैं और लोग बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं, पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं. यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा नहीं है, जबकि उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए यहाँ पर सारे तत्व मौजूद है. जमीन है, खनिज है, पानी है, बिजली है, वगैरह वगैरह. उद्योग धंधों के नाम पर मात्र एक कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री है जिसका ही उत्पादन क्षमता बहुत सीमित है और रोजगार देने की क्षमता और भी ज़्यादा सीमित है. ऐसी परिस्थिति में लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और प्रतिवर्ष जब झारखंड से बाहर रोजगार के लिए जाते हैं तो
उनकी लाशें आती है जो बहुत हृदय विदारक सीन उत्पन्न करती हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से माननीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जी से अनुरोध है कि वहाँ पर खाद का कारखाना स्थापित करने की कृपा करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, कृषि की उपज में वृद्धि हो सके और पलायनवाद की भी समस्या समाप्त हो सके। धन्यवाद। श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी। Thank you, Speaker, sir, for giving this opportunity. Sir, this is a very serious issue and a long pending issue which is impacting my constituency, Jaipur. Sir, this is about the transfer of EPF past accumulations of employees of erstwhile Built Graphic Paper Products Limited, BGPPL, Unit Seva, which comes under OR/BAM/2910. They are now reporting compliance to RPFC Barampur being employees of Messrs. Mother Earth Resources Private Limited, MERPL, Seva, which is ORBAM/2468945. Sir, isme the problem is this Seva unit, which was sold by BGPPL to MERPL in the month of February 2020. But after that, the PF amount, the accumulated PF accumulation, this is under RPFC Kolkata, and they need to transfer it to RPFC Barampur. Sir, this has been, we've been told that all permissions are now available. The trust is ready with the requisite fund towards the payment of the past accumulation. It is also confirmed the concern that entire fund is generated from accretion of the trust and not from sale of any securities or otherwise. So the retired legal heirs of expired employees have been approaching multiple times, and whenever I go there, they approach me on their pending dues. As the matter is pending for more than a year and a half, this has put the concerned employees towards unexplainable difficulties. So the district administration has also written a letter to the chairman, Central Board of Trustees on 10th April 2023, but there has been no response. We've been following with the Regional Provident Fund Commissioner, EPF of Calcutta. There is no response. KCDPF Trust, Calcutta, they have written to RPFC Calcutta to resolve the issue of PF transfer. There is no response. The RPFC Barampur, some fellows from them, they visited Jaipur also. They are saying they're helpless until RPFC Calcutta transfers the fund to RPFC Barampur. So, sir, through you, I would like to request the Honorable Minister of Labour and Employment to take up the issue and instruct the transfer of Provident Fund of retired expired employees of Messrs. Mother Earth Resources Private Limited, Jaipur, from the KCT PF Trust, Calcutta to RPFC Barampur, Odisha, in the largest interest of employees of MS Mother Earth Resources Private Limited, Jaipur, Koraput, Odisha, sir. Thank you, sir. I would appreciate if the ministry would take this cognizance of the situation and the ground reality and do the thing at the earliest. Thank you, sir. Sir, with a heavy heart, I would like to draw the kind attention of this August House as well as the Minister for Home about the sad plight of people of Tamil Nadu. Sir, the flood, the recent flood have battered more than 1 crore people in city of Chennai, districts of Tiruvallur, Kanjipuram, Chengalpet, and Ranipet also. So the situation is very grim, and people are they are inside the home for the past 3 days. From 3rd onwards, there is a continuous torrential rain. And cyclone is its fury has fully dedicated its fury to the people of Tamil Nadu. So it was so heavy and could not bear with it, and people are stranded elsewhere. The trains are halted outside the city of Chennai, and flights are not moving. And more people, thousands and thousands of people are even, they could not get the food supplied by the government of Tamil Nadu, and government ministers are going shelter to shelter to help the people, but they could not extend their hands, helping hands to the public, because flood waters are in the streets. All the streets are flowing like rivers. So there is a chance to move to the people, sir. CM Tamil Nadu is having day in night
Even today morning, early morning also, he went out to see the people of Chennai, but he could not reach so many people together. So this is the sorry state of affairs is prevailing in Tamil Nadu, and Government of India should come forward to help. In fact, yesterday the Home Minister has spoken to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. It is good, and at the same time, State of Tamil Nadu has sent 3 memorandums. Financial memorandums have been sent to the Government of India for an amount of 6,230 crores. But today the CM has asked for 5,000 crores, at least 5,000 crores for a stopgap arrangements. This matter has to be immediately, it has to be considered without fail, and they should extend the helping hand in time. In time means they have to do it quickly, and central team should be sent to the states, to the districts, wherever the problem arises, and quickly these teams should go. Enough teams should go so that in one go they should assess the situation, what is the damage occurred, how the more than 8 people have died so far, and we don't know what is the toll as of now. So this is more important issue. Even yesterday, when I have discussed the matter in the BSc, both Parliamentary Affairs Minister and other ministers, they have agreed that it should be given topmost priority. But what is happening, sir? The fag end of the 0 hour, you are allowing me to speak. This is not good, sir. So actually, I thought that this should have a priority over the issues. I don't think that the other issues are not. They are also good issues. But at the same time, priority should be given to the human nature. That is what I am telling you, sir. So kindly see that Government of India should come forward. The Home Minister should specifically take care to see that the amount is dispatched quickly, and also along with the men and machineries, so that to help the state of Tamil Nadu quickly, sir. Thank you, sir. You all are supporting the Baluji's argument, sir. It's a valid and legitimate demand, sir. ठीक है बैठिए श्री जयदेव गल्ला जी इसी थैंक यू सर ठीक है आप नाम भेजिए ना प्लीज नाम भेज दीजिए अभी तो बैठिए अभी तो उनको बोलने दीजिए प्लीज सेम सब्जेक्ट आप बैठिए बालू साहब बैठिए प्लीज सेम सब्जेक्ट हाँ about Andhra also we also have problem no cyclone बैठिए तो सही आपका विषय निश्चित रूप से सब सहमत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार पहले से भी संज्ञान ले रही है और भी अधिक सक्रिय होकर के संज्ञान लेगी जी सर Thank you, sir. As the honourable member, Mr. T.R. Balu, has mentioned about the cyclone, we also have the same problem in lower coastal Andhra Pradesh. There has been very heavy rain over the last 2 days due to the cyclone over the west central Bay of Bengal of southern AP, sir. The Indian Meteorological Department announced landfall of Mishong today, somewhere between Bapatla and Machilipatnam in lower coastal Andhra Pradesh. Heavy rains have devastated the standing crop in tens of thousands of hectares in coastal and other districts of Andhra Pradesh. This cyclone has brought tears to the farmers as the crop which is ready for harvest is lost before their very eyes, sir. The state government is still in the process of identifying and assessing the damage, and it may take some time to come to the conclusion about the damage to crop, life and property. Due to the heavy rains, roads have been damaged, supply of electricity is disturbed, people are not able to fetch essentials apart from other problems being faced by them. In view of the above, I appeal the Honourable Prime Minister, Shri Modi ji, for immediately sending the central team once the rain recedes for assessing the damage caused to the standing crop, roads, buildings, electricity supply and other infrastructure facilities and submitting its report to the government for release of central assistance. Pending the report of the central team, I request the Honourable Prime Minister and the Honourable Home Minister to release 5,000 crores to Andhra Pradesh as an interim relief immediately to deal with the relief and rehabilitation work due to cyclone Mishong. Thank you very much, sir. Shri Mohan Bhai Kundaria ji. जी मोहन भाई आपका माध्यम से विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सौराष्ट्र क्षेत्र के विद्यार्थियों और उद्योगों के लिए
वीजा फैसिलिटी सेंटर अहमदाबाद में होने के कारण 250 से 500 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है। इसलिए राजकोट औद्योगिक सेंटर है, यहाँ एम्स हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो इसके लिए वीजा फैसिलिटी सेंटर राजकोट में मिलने के लिए आपका माध्यम से मैं मंत्री का ध्यान आकर्षित करना और विनती भी करता हूं। थैंक यू। जरा सा जी, श्री एस रामलिंगम जी। मिस्टर लाल जी। மாண்புமிகு नो மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே, डोंट यूज दीज वर्ड्स प्लीज। மயிலாடுதுறை ओके புகைவண்டி நிலையத்திற்கு அருகில் மாப்படுகை பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கை. ரயில்வே நிலையத்திலிருந்து சுமார் 100 மீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது இந்த மாப்படுகை சாலை. ஆம்புலன்ஸ் தீயணைப்பு வண்டிகள் கூட அந்த சாலையில் நேரத்திற்கு சென்று சேர இயலவில்லை. சுமார் அரை மணி நேரம் ஒவ்வொரு புகைவண்டி நிற்கும் போதும் சாலை மூடப்படுகிறது. நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் தேங்கி கிடக்கிறது. இந்த மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தை புனரமைப்பதற்காக 24 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் 6 மாத காலமாக நானும் அமைச்சரை 3 முறை சந்தித்து இந்த கோரிக்கையை வைத்தேன். இன்று வரை எந்த பலனும் ஏற்படவில்லை. என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதி வளர்ச்சி நிதியிலிருந்து அந்த சாலையொட்டி உடனடியாக எஸ்கலேட்டர் அமைப்பதற்காக 3.25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி கொடுத்தும் பணி துவங்கப்படவில்லை. प्लीज स्टॉप। राइट नाउ द अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसलेशन इज नॉट हियर। आपको मैं बाद में बुलाऊंगा। आई विल कॉल यू लेटर। नाउ प्लीज यू सिट डाउन। आई विल कॉल यू लेटर। प्लीज प्लीज। हो जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नोटिस थोड़ा देर में आया। वी विल yes please cooperate. You all know the issues and the problems and what is the system. श्री VK श्री कंदन जी। Respected Chairman ji, Bharat Earth Movers Limited is a profit-making company with orders worth more than rupees 10,000 crore won through mostly global tenders. The company had made a profit of rupees 278 crore in 2022-2023, and the government so far got rupees 400 crore in the form of dividends. A unit of BEML at Kanjikot in my parliamentary constituency has already delivered 1,500 heavy military trucks, 300 railway coaches and 500 metro bogies. The government had to abandon a move of disinvestment in BEML in 2016 due to stiff opposition. The privatization move again is not in the interest of our nation's security. Therefore, I urge upon the government not to privatize BEML and withdraw such a move immediately. Thank you, sir. श्री रघुराम कृष्ण राजू जी। Thank you, Honorable Chairman, sir. This is regarding the Independence Gram Swaraj, which is initiated by Mahatma Gandhi, and later on the government followed. And in the government of Narendra Modi ji, lot of priority has been given to all the Gram Panchayats, and lot of funds are also being released. In this case, last year, to the government of Andhra Pradesh, 569 crores got released to the Gram Panchayats, but not even a single penny has come to the accounts of the Gram Panchayats, which was given under 15th Finance Commission. And in the 14th Finance Commission, starting from 2019 to 2023, around 8,629 crores got released, but nothing has been credited to the accounts. We all have met the Sarpanchas Association of Andhra Pradesh, where all party members are there, predominantly dominated by my present party. We all have met
Honorable Minister Giriraj Singh Ji and given a representation. He is kind enough to give a note to the state government to give back the money within 10 days. But in the last 3 months also, nothing has happened. Now, with this, the villagers are greatly suffering, and the dream of the Honorable Government of India, led by Narendra Modi ji, is not getting honored. So I once again request Honorable Minister Giriraj Singh Ji, who was here till now, I had already briefed him this morning also, through the Honorable Chairman, sir, to take it up immediately on priority. And one more minute, sir, just one more minute, I'll finish. And there has been a new system known as volunteer system, which has totally replaced the sarpanches and the ward member system, wherein totally dysfunctional. The village system has got totally dysfunctional. I request the Honorable Member Panchayati Raj, as far as the village development is concerned, it should be left with only the Panchayat, Sarpanch and the ward members, not with the volunteers. Thank you, sir. Okay. Dr. Dhal Singh Bisain ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान युग डिजिटल का है और इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नेटवर्क की आवश्यकता होती है। और जैसा कि आपको विदित है अध्यक्ष महोदय कि वर्तमान में सारे काम ऑनलाइन होते हैं, चाहे ऑफिस के काम हो, किसानों के काम हो, पढ़ाई लिखाई के काम हो, चाहे विभागीय सारे काम हो, इन सब के लिए चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम हो, सभी काम के लिए ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो तो भारत जो है एक डिजिटल लेन देन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। और डिजिटल लेन देन हो या कार्यालयीन कार्य, इन सब के लिए मोबाइल नेटवर्क अति आवश्यक है अध्यक्ष महोदय। किंतु आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क सब जगह ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है और जिसके कारण से इन सारे विभागीय छात्र छात्राओं और अनेक सारे कामों के लिए नेटवर्क की उपलब्धता ठीक से नहीं होने के कारण, नेट ठीक नहीं चलने के कारण सारे काम प्रभावित होते हैं। और विशेष करके बीएसएनएल का और बीएसएनएल का जाल लगभग उसके अलावा पूरे प्रदेश में नहीं सारे देश में बीएसएनएल एक अपने नाम के लिए जाना जाता है। पर सभापति महोदय अभी भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2G सेवाओं से आगे बीएसएनएल नहीं बढ़ पाया है, जबकि अन्य जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं वो 3G, 4G और 5G तक चली गई हैं। और जिसके कारण से स्पीड में नेटवर्क नहीं मिलने के कारण से सारे लोग परेशान हैं, छात्र छात्राएं परेशान हैं, जो गांव में काम करने वाले पढ़ने वाले छात्र हैं वो परेशान हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में भी बीएसएनएल की सेवाएं और सुदृढ़ हो, अच्छी हो और इसके अलावा अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाएं उनका भी नेटवर्क अच्छा चले ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सारे ऑफिसेस को काम करने में अच्छी सुविधा मिल सके। आपने समय दिया सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अनुराधा चिंता जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, people living near oil and gas drilling sites in Andhra Pradesh, East Godavari districts face the risk of being exposed to oil or natural gas leakages from the plants located in the vicinity, especially in the Dr. B.R. Ambedkar Koresava district, which has been witness to such incidents in the past. According to reports, GAIL operates pipelines extending to a length of 430 kilometers. ONGC operates 120 kilometers of pipelines, and Reliance operates a 36-kilometer pipeline in the Konesima region. Though the officials of said companies have been asked to replace old pipelines in the region to ensure the safety and safety of the local communities and prevent mishaps and prevent frequent gas leakages from the existing pipelines, there is an immediate need to establish a crisis management facility in the district considering the operations of numerous oil and natural gas producing companies in the said region to effectively handle emergencies of crisis. I would therefore request to the government to take immediate steps to include a comprehensive risk assessment for the oil and natural gas operations in Konesima district and ensure the establishment of a crisis management facility at the earliest. Thank you. Dr. Sanjeev Kumar Shangri ji. Thank you, Honorable Chairperson, for giving me this opportunity to speak on railway issues of Kurnool Parliamentary Constituency. Sir, Kurnool Parliamentary Constituency, which I represent, deserves additional railway facilities in view of its overall backwardness.
Andhra Pradesh has 3 regions with diverse culture and dialect. Rayalaseema region is one of them, and Kurnool is the gateway of Rayalaseema. Kurnool, the erstwhile capital of Andhra state, is a backward district in all respects. Demographic indicators stand testimony to this fact. Kurnool was capital of Andhra state from 1953 to 56, and the capital was shifted from Kurnool to Hyderabad when states were reorganized on linguistic basis. There is a strong feeling in Kurnool region that a serious historical mistake was done when the capital was surrendered in favor of Hyderabad. The region was neglected for 7 decades by successive governments. This injustice should be relieved. Kurnool region is very backward as per the report of Sivaramam Krishnan Committee, an expert committee which was constituted under Section 6 of the AP Reorganization Act 2014. Kurnool region has challenges of high dependency ratio of 55%, low literacy rate of 65%, low urbanization of 29%, and has a young growing workforce. These problems need to be addressed with a humane touch, sir, and every investment in public utility cannot be seen from a commercial angle. Following the principles of natural justice, all regions of India should be developed equally. All of us should agree that injustice was meted out to Andhra Pradesh with unfair state bifurcation. We need a helping hand from the union government. Sir, economic growth, employment, income generation, and equitable distribution of growth are essential for all regions of Andhra Pradesh. It is distressing to note that domicile migration, that is distress migration from this area, is in lakhs every year. Nearly 3 lakh people migrate to different areas from Kurnool parliamentary constituency. The area has problems of water supply, though Tungabhadra River traverses 95 kilometers in Kurnool district. Only 60% of cultivable land receives water supply. People hardly cultivate 1 crop per year. So people travel hundreds of kilometers in search of job. People are asking for a better connectivity with cities like Visakhapatnam and Vijayawada, which are the 2 cities of Andhra Pradesh. National highway connecting Kurnool and Vijayawada, which traverses through reserve forest, needs upgradation. Road journey is tedious, and there is no express train connecting between Kurnool and Vijayawada and Visakhapatnam. So at least a good railway connectivity is needed for this region. We are not asking for a new railway track. We are just asking for a train service on the existing railway tracks. As a representative of 22 lakh population of Kurnool region, I have been requesting railway authorities for some facilities like train halls at Madhikera, Kosigi and Adoni, direct train service from Kurnool to Mumbai in favor of thousands of North Indian families doing business in Kurnool, and speeding up of construction of railway rehabilitation workshop at Kurnool. Sir, I made nearly 15 representation to Railway Ministry in past 4 years. Response is not encouraging. I take this opportunity to request the Honorable Minister of Railways to please start a daily train service from Kurnool to Visakhapatnam via Vijayawada. A tri-weekly train with number 07237 was running on ad hoc basis, but that too was withdrawn recently for reasons better known to the officials. Thank you. Thank you. Sir, passenger services cannot be viewed in commercial angle. Occupancy of the service was good enough and would have improved further had it been a daily service. Sir, to conclude, I request the Minister of Railways to restart the train on daily basis, and I hope this facility can bring solace to the injured hearts of people who feel that many historical blunders were committed against the region. There should be equitable development of all regions of the country. Thank you, Chairman, sir. Give me opportunity to raise very urgent and public importance matter which is related to my parliamentary conscience. Sir, the fight and agony of cashew workers who are workers in Kollam and Alappuzha in Kerala who are striking for want of renewed wages and decent benefits from their occasion is a grim and unfortunate picture of the crisis engulfing the cashew sector in Kerala, which is livelihood of more than 3.5 lakh workers, a majority of them being women from backward communities. The minimum wages of cashew workers are not revised even after 10 years since then Ummanchandi government, which was the last government to have increased the wages of cashew workers. The present state government under Chief Minister Pinarayi Vijayan has ignored the plight of cashew workers and their wages is not revised. The present wages are even lower than wages of Manrega workers. The strike of cashew workers, including in my parliamentary constituency, various cashew factories like Karimulakal, Noranad and adjacent
constituency, Kayangulam, and also Adinad, Kollam. So all factories come under Cashew Development Corporation. Demanding rise the minimum wages is not limited to Kollam district alone, but also these cashew workers are striking not only in Kollam district, other districts also. My Kalapi, Pathanamthitta, Thiruvananthapuram district also facing this crisis. So, but sir, the benefits of cashew workers, including ESI and PF benefit, also not getting properly, because the ESI benefit is denied cashew workers because of the thin attendance, the working hours and also working days also working days also not properly. That's why ESI benefit also and also PF benefit also not getting for cashew workers. So I am coming, sir. Sir, the women cashew workers earn 500 rupees per day. Now workers are getting 35 for shelling 1 kg of raw cashew and 45 for peeling the kernel. The merged sum they get in a while does not even cover their food expense or medical emergencies. Many women's cashew workers are now working as household help and do other sundry jobs sustain themselves. Sir, there was a time when more than 780 licensed cashew factories function in Kerala, which has now reduced less than 800 cashew factories. Please. Sir, I am coming, very important, I am coming, sir. Sir, the 1980s and 1990s, cashew has peaked 1,25,000 metric tons, which has sealed down to less than 20,000 tons. This situation indicates alarming crisis of entire industry. Banks have owned up numerous cashew factories and more than 10 cashew factory owners. More than 10 cashew factory owners whom small size factories own have committed suicide in Kerala. Therefore, the plight of the cashew workers must be addressed by declaring special package for welfare of cashew workers with the umbrella welfare option, including ex gratia, financial support during the period of. Sir, I am coming. आप अधिक समय लेंगे तो किसी अन्य माननीय सदस्य का अवसर समाप्त होगा. 1 minute, sir. Last point. Please conclude immediately. Last point. Sir, financial support during the period of unemployment, free medical treatment, and ESI hospital soft loans. The cashew workers must be given their fair share outstanding. Come to the demand outstanding. Yeah, I am coming to point, sir. So, outstanding bonds and other benefits are denied them due to winding down cashew factory, additional benefits, loan waivers, medical facility, all cashew workers, irrespective of the last status of employment and premium payment. With these words, sir, so very serious matter, and also the. धन्यवाद जी सभापति महोदय. धन्यवाद सभापति महोदय. कि 0 आवर की समय की मर्यादा का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए. थोड़ा बहुत 10-15 सेकंड चल सकता है, बट नॉट मिनट्स, प्लीज. जी धन्यवाद सभापति महोदय, आपका जोहार. मेरे लोकसभा रांची जो हटिया विधानसभा के नगरी नामक स्थान है, जहां से स्वर्ण रेखा पवित्र नदी निकलती है, जो रांची शहर होकर गुजरते हुए जमशेदपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है. 474 किलोमीटर लंबी इस नदी, जो झारखंड की लाइफलाइन कही जाती है, रांची की लाइफलाइन कही जाती है. झारखंड की प्राचीन संस्कृति में इस नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है. रांची में चुटिया नामक स्थान में स्वर्णरेखा नदी एक सहायक नदी हरमू से में आकर मिलती है. इस संगम पर करीब 500 वर्ष पुराने नागवंशी कालीन 21 शिवलिंग नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण है. कभी नागवंशी राजाओं की राजधानी चुटिया होती थी और वह सांस्कृतिक अवशेष एक जीवंत धनाढ्य संस्कृति की गैर योजना से तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण यह नदी एक हरमू में मिलती है. वो नदी क्या नाले में तब्दील हो चुकी है. नदियों के किनारे अतिक्रमण, शहर का सीवरेज जो सिस्टम, उसका पानी और स्वर्णरेखा नदी में गिरता है. दिल्ली की यमुना नदी से भी स्थिति उस स्वर्णरेखा नदी की खराब हो गई है. इन दोनों नदियों के संगम तल
के स्थल पर स्वर्णरेखा बिल्कुल काली पड़ती हुई जा रही है। आज से लगभग 10-15 साल पहले पूर्व से हजारों की संख्या में छठ व्रती वहां अर्घ देने जाते थे। महोदय सभापति महोदय, बहुत अहम विषय है मेरे राज्य सारे के विषय लिए। अहम होते हैं। मैं भी वहां सावन के महीनों कांवर लेके उस स्वर्णरेखा के नदी के तट से पानी लेकर पहाड़ी मंदिर पर बाबा का अभिषेक करने जाते थे। वहां अनेक तरह के मेले, आप कृपा करके नरेंद्र नारायण भोजन क्या आप चाहते हैं ये बताइए। हर एक घर से एक एक मुट्ठी चावल और दाल लेकर प्रसाद बनाया जाता था, लेकिन नदी के प्रदूषण होने कारण लोगों ने इस नदी से खुद को दूर कर लिया। अब छठ और कार्तिक पूर्णिमा दोनों में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई। नदी के चट्टानों में उसकी जो शिवलिंग है मांग रखिए, तेजी से क्षरण हो रहा है। मेरे यह डिमांड है कि दीर्घकालीन योजना बनाकर इस स्वर्णरेखा नदी, जो पवित्र नदी, इसको बचाया जाए, क्योंकि वहां की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। यह नदी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कैसे हम सब बचाएं, इस पर आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। श्री एस रामलिंगम जी। மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே, மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தில் சுமார் 100 மீட்டர் தொலைவில் மாப்படுகை நெடுஞ்சாலை அமைந்துள்ளது. இதில் மேம்பாலம் இல்லாத காரணத்தினால் அவசர காலத்தில் ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு வாகனங்கள் கூட செல்ல முடியாத நிலை. எனவே இந்த லெவல் கிராசிங் நம்பர் 229 இதில் உடனடியாக மேம்பாலம் கட்டப்பட வேண்டும். கடந்த 24/11/23 அன்று பொதுமக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் கூடி சாலை மறியல் செய்தார்கள். அப்போது மாவட்ட ஆட்சியர் தலையிட்டு விரைவில் இதற்கான பரிந்துரையை நான் அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தார். இருந்தும் கூட இதுவரை எந்த பணியும் துவங்கப்படவில்லை. இந்த ரயில்வே தடத்தில் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் அரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை தேங்கி கிடக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இதே மயிலாடுதுறை புகைவண்டி தடத்தில் இரட்டை வழிப்பாதை விழுப்புரம் வரை அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று பலமுறை வற்புறுத்தி இருக்கிறேன். இதுவரை செய்யப்படவில்லை. மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தில் எஸ்கலேட்டர் அமைப்பதற்காக முதல் பிளாட்பாரத்திலிருந்து 3வது பிளாட்பாரம் செல்ல முடியாத நிலையில் என்னுடைய தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து 3.25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தும் புகைவண்டி துறையில் இதுவரை அதற்கான பணிகள் துவங்கப்படவில்லை. மேலும் 24 கோடி ரூபாயில் புனரமைக்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். 2 வருட காலமாகிறது, எந்த பணியும் இதுவரை துவங்கப்படவில்லை. நான் இப்போது கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் மிக மிக அவசரமான ஒன்று, இந்த மேம்பாலம் லெவல் கிராசிங் 229. இந்த மேம்பாலம் அமைந்தால்தான் அந்த பகுதியில் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களை இணைப்பதற்கான வழிவகை ஏற்படும். எனவே உடனடியாக இந்த மேம்பாலத்தை அமைத்து தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री अधीर रंजन जी। Sir, I would like to flag the attention of this government that it is alarming to note that there is no respite of ethnic conflict and violence in the state of Manipur. Sir, it is paradoxical to note that on the one hand, both the central government and state governments are glibly claiming the peace and normalcy being restored in the state of Manipur. But on the other hand, the grave situation itself which is prevailing over there is an eloquent testimony of the abysmal failure of the state government of West Bengal, state government of Manipur. So the issue has come to such a pass that even day before yesterday, 13 deaths have been reported in the newspaper. But the issue is that the government has been found totally impervious to the intensity of the violence, to the sensitivity of the northeastern state, as if nothing is happening over there. So the government of Manipur has been totally failed to maintain
the law and order situation in Manipur, and the situation has been right to discharge. एक मिनट में अपनी बात कहिए. The situation has been right. जी. Sir, situation has been right to impose presidential rule. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज भारत सरकार के एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना हर घर जल योजना के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं. मानवर एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके आस में गांव के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में हर घर जल योजना के कार्य करने वाली एजेंसियां मनमाने तरीके से गुणवत्ता विपरीत कार्य करके धन का अपव्यय कर रही हैं. इस तरह के समय से परियोजना पूरे न होने से संशय प्रतीत होता है. वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा गांव ग्रामीण की सड़कों के किनारे लेने वाली एजेंसियों ने सबलेट कर स्थानीय लोगों को काम दे दिया गया है. उन्होंने स्वयं भी सबलेट कर दूसरे लोगों को काम देकर गाड़ियों की गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए बनी हुई सड़कों के किनारे गांव की इंटरलॉकिंग. शुक्रिया स्पीकर साहब, तुसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाउण दा मौका दिता. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ बनामुखी अमृतसर तो लालकुआं जयनगर अजमेर के टाटा नगर. माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री को ध्यान आकर्षित करता हूं कि जो सड़कें गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में टूट गई हैं, ऐसी कार्यदायी संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई की जाए. एक मिनट प्लीज, एक मिनट, अगले वक्ता के नाम में बोल दूंगा. सर जी शुक्रिया स्पीकर साहब रेल विभाग वालों अमृतसर तो चलने वाली ट्रेन जड़ियां ने वो अमृतसर तो बनामुखी लालकुआं जयनगर अजमेर टाटा नगर नंगल डेरा बाबा नानक पठानकोट ते चंडीगढ़ बंद कर दी गई ने. धुंध का बहाना लाया 1 दिसंबर तो लैके 29 जनवरी तक 2 महीने ट्रेन बंद ने. धुंध सिर्फ 15 दिन पैंदी है. पठानकोट डेरा बाबा नानक पट्टी ते ਜਿਹੜੀ खासकर चंडीगढ़ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ट्रेन हज़ारां लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ चंडीगढ़ राजधानी है हाईकोर्ट है, हज़ारां लोग उत्ते सफर करते हैं. 2 महीने लोग किवें जाणगे? किसान अपनी फसल लैके अमृतसर दे विच किवें आएगा? मजदूर जिहड़ा है वो अपनी मजदूरी वास्ते अमृतसर तक किवें पहुंच करेगा ते मजदूरी करन तो बाद घर किवें पहुंचेगा? वीरेंद्र जी माइक आप लंबी बात बोलने लगे हैं. बैठो यार सब. बैठो तो बोले जी. अरे बोलिए सर. मेरी सरकार तो दरखास्त है कि 1 दिसंबर तो 29 फरवरी तक ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रेन बंद कीतियां ने उन्होंने बहाल किया जाए ताकि लोग वीरेंद्र जी सुखी रहन. श्री वीरेंद्र सभापति महोदय, मैं भारत की संसद को और यहाँ बैठे हुए सभी सांसदों को और देश में यहाँ अनुपस्थित सांसदों को मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ. भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए जैसे विश्वकर्मा योजना है, किसान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके लिए मैं अपने लोकसभा क्षेत्र बलिया में एक कार्यक्रम लोक संवाद का चला रहा हूं. गांव सभा से लोकसभा तक. उसमें सारे संबंधित अधिकारी उपस्थित रहते हैं, डीएम, सीडीओ और सभी संबंधित अधिकारी और सारे विभाग के अपने सरकार की योजनाओं को लाभार्थी बनाते हैं. गांव सभा का सदस्य जो कभी पूछा नहीं जाता था उस संसद के लोक संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित रहता है. और मैं निवेदन करता हूं कि पहले इसको लाभार्थी बनाओ, फिर 5 लोगों को ये लाभार्थी बनाएगा. मैं वहां के हमारा लोकसभा क्षेत्र बलिया 2 जिलों में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर. मैं वहां के डीएम, गाजीपुर के डीएम और बलिया के डीएम और सीडीओ दोनों जिला के सीडीओ को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सारे संबंधित अधिकारियों को बुलाकर लाभार्थी वहीं बनाते हैं और उनको 5 लोगों को लाभार्थी बनाने का मैं निवेदन करते हैं. आपकी तो आप चाहते क्या है? आपकी क्या डिमांड है? लोकसभा आपकी मांग क्या है? गांव सभा से लोकसभा तक का कार्यक्रम भारतीय लोकतंत्र को भी गांव सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.